Hi. Hello. So, good morning. This is Dinesh here once again, and I'm there with my daughter Shrejal. Hi, Shrejal. Hello everyone. So, what we are over here for is to analyze the newspaper on a daily edition. So, आज संडे है. संडे और जो न्यूज़पेपर हम लोग एनालाइज करेंगे दैट इज़ द हिंदू. और इस न्यूज़पेपर के जो बेसिक कुछ आर्टिकल्स जो हमने देखा कि बच्चों के लिए रेलेवेंट हो सकते हैं उनको हमने इंक्लूड किया हुआ है. सो इज इट नॉट? यस. तो उन आर्टिकल्स पे हम लोग एम्फसाइज करेंगे. बाकी और भी आर्टिकल्स हैं इस न्यूज़पेपर में दैट वी वोंट बी गोइंग थ्रू जस्ट उसके जो हेडलाइंस है बस वो हेडलाइंस हम उसके कैप्चर करेंगे एंड दैट्स ऑल. सो Shrejal, introduce yourself and then we'll begin. Yes, I'm Shreya Bharti. I'm studying in grade 4. My hobbies are to color, draw and read newspaper. That's why I'm here again. So शुरू करते हैं. Today 5th of December Sunday और कमिंग फर्दर वी हैव द कवर पेज. हमारा जो हिंदी न्यूज़पेपर है, एक्चुअली मैंने इस न्यूज़पेपर को इसलिए सेलेक्ट करा है, मैंने बताया कि यहाँ पे डिटेल न्यूज़ प्रोवाइड होती है. डिटेल फिर उसका रिव्यूज़ होता है, न्यूज़ कंटिन्यूएशन में आती है तो उसकी डिटेल थरो एनालिसिस की जाती है. सो ऑल दीज एस्पेक्ट्स आर देयर. तो एज इज बीन शोन ओवर हियर, ग्रीन पोर्शन और द ग्रीन हाईलाइट्स आर द वन दैट व्हाट आई थिंक इज रेलेवेंट फॉर द चिल्ड्रंस, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होते, दे आर वेरी मच सिंपलिस्टिक, while the others are a bit more complex or do other news or in the form of the political matters उसमें होते हैं. So that's why I have I will not be going through और इनको जो हमने है वो highlight नहीं किया है. However, these are the headlines of the given cover page. तो headlines को हमने बस रखा है और we will be just going through the relevant ones that is highlighted into the pink braces. तो पहला हमारा जो आर्टिकल है दैट इज रिगार्डिंग द कल्चर मैपिंग ऑफ 80 विलेजेस किक्स ऑफ. तो कल्चर मैपिंग है, दिस इज वन ऑफ द प्रोग्राम दैट हैज बीन इनिशिएटेड बाय द कल्चर मिनिस्ट्री और हैज टू गो फॉरवर्ड. तो यहाँ पे द कल्चर मैपिंग ऑफ 80 विलेजेस एसोसिएटेड विथ नोटेड पर्सनैलिटीज इन हिस्ट्री इन द पर्टिकुलर टू द फ्रीडम मूवमेंट, यूनिक क्राफ्ट, फेस्टिवल्स, ऑल दीज हैज बीन स्टार्टेड एज अ पायलट प्रोजेक्ट. तो ये अभी स्टार्ट किया जा रहा है एज अ पायलट प्रोसेस. जस्ट गेटिंग द हाईलाइट ओवर हियर. तो 80 विलेज को आइडेंटिफाई किया गया है. और Shrejal? Yes. From Sempor in Kashmir to Kanjirapalli in Kerala. तो कश्मीर से केरला तक विलेजेस हैं 80, दे हैव बीन आइडेंटिफाइड. Yeah, villages with a connection to the freedom movement as well as those with their own art practices have been selected for the project being conducted by the Indira Gandhi National Center for the Arts, that is IGNCA. So यहाँ पे all over India, across India with a given theme, एक identified theme के according में the villages has been selected and the work is going to get initiated. The work under the mission involves coordinating the data collection through ground and the field surveys. So it will be collected and inducted to showcase the ethnography, documentaries, cultural events, festivals, etc. of those villages. तो इस तरीके का data gathering होगा in order to bind them together into a common philosophy. The aim is to create a database related to our villages and the culture, customs and traditions. There, the project would lead to a national register and interactive database. तो एक database जिसके through हम interact कर सकते हैं. Interact database of artists and art practices from the village of India. और ये project that is expected to be completed in this financial year itself. So as March 22 के roundabout we expect to complete this project. So this is all about one of the articles that is there in this cover page of the Hindu newspaper. Moving further, there are other articles also as said, but the headlines of them are there.
Like the fresh cases in Maharashtra and Gujarat take Omicron tally in India to 4. हमने देखा था 2 पहले थी, अभी 2 और बढ़ गई है, तो टोटल 4 हो गई है. And 5-member panel to pursue farmers' demand and culture. Weekend Jawad, trenches coastal Orissa. तो ये पर है. This we will be covering into the news section in detail, which will be coming later on. So moving further, next page of the Hindu today's edition, and that is for the city. यहाँ पे हमारा एक आर्टिकल है DU रिगार्डिंग DU एडमिशंस का एंड पैनल टू गो फॉर अ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट. तो दिस आर्टिकल इज बीन डिस्कस्ड and this is regarding the Delhi University and the admission. So what has been, अभी हमने देखा होगा न्यूज़पेपर में कि cut off basis admission are there in the university and these cut offs are really high. आपको पता है कितना cut off जाता है at times? No. It even goes to 100. 100 out of 100. 100 out of 100. Yes, so they are mostly in 90s, but at times for some of the subject it goes into 100. तो ये एक है जो कि so इसको अब what has been identified, and but this is not one of the reasons. There is another reason also. There are other reasons also that has been looked into, और तब ये शायद फैसला लिया जा रहा है कि ये कॉमन एडमिशन टेस्ट होगा, उस कॉमन एडमिशन के टेस्ट के थ्रू ही एडमिशन होगा. So this is what's being discussed. तो चलते हैं. The 9-member panel constituted by Delhi University Vice Chancellor Yogesh Singh has recommended that the Varsity holds a common interest test to ensure substantial objectivity in the admission process. क्यों? क्योंकि एक कंट्रोवर्सी निकल करके आया था over the high number of percentage involved from the students who are passing out from the Kerala board. तो ये एक कंट्रोवर्सी आया था. फिर उसके बाद कुछ डेटा एनालिटिक्स किया गया, जो एडमिशन है कौन कौन कहाँ से आ रहे हैं उसको स्टडी किया गया. तो दैट इज कवर्ड इनटू द सेकंड. सो सृजल. Yeah, the community forum was supposed to examine the reasons for over and under admissions to undergraduate courses, study the board-wise distribution of admissions in all undergraduate courses, suggest alternative strategies for optimal admissions in undergraduate courses, and examine OBC admissions with reference to the non-creamy layer status. तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं, but in order to simplify it, जो है हमारा कि the committee was formed to examine the reasons over and under admissions of the undergraduate courses. क्या reasons था? Study the board wise distribution of admission on all undergraduate courses. तो इन दो बातों को देखते हुए और फिर suggest an alternative strategy for the optimal admission in the undergraduate courses और examine the OBC admission. तो ये 4 factors को लेकर के 2 factors and then suggest what's going to come through and examine the OBC admissions with reference to the non-creamy layer. तो इनको देखते हुए एक 9-member panel का constitution हुआ था, which has been already stated into the top portion, और that was the reason behind it. और उसके बाद जो findings है, these are the findings. They analyze the data of admission which are cut-off based. अभी तो cut-off based है, so this is what has been analyzed and looked into, and saw that it showed a highest intake of students from the CBSE board, followed by the Kerala Board of Higher Education. This is the Kerala Board of Higher Education, and then the Haryana Board and ICSE Board. तो mostly इन चारों board के students, they are the one whose the marks into the board examinations really high, and because cut off based है. cut off based होने का मतलब समझ रहे हैं? cut off means एक particular marks जिसका है top से चुन करके ले लिया जाएगा. Okay, so the top candidates हैं, based on the marks obtained, they will be taken for the courses. But अगर वो entrance examination हो जाता है, then what happen? Will not be taken? No, comparative examination will happen. सब एक को अलग से एक एग्जाम देना पड़ेगा, और उस एग्जाम देने के बाद the one who are the top, or one who scores a given marks above a given marks, उनको फिर एडमिशन लिया जाएगा. हाँ, तो एक अलग से एग्जाम होगा. ओके, सो पहले तो बस बोर्ड एग्जाम किया, नंबर आया, नंबर के बेसिस पे हमने एडमिशन ले लिया. अभी क्या है कि
you have to give another examination of that specific mark, and you have to go up top that mark, and then you have to if you get the full mark or above that mark, you will be taken. Exactly. तो अभी जैसे आप पहले 3 में थी, फिर 4 में हुई, बेस्ड ऑन अ गिवन थ्रेशोल्ड 35 या 40 जो नंबर था, तो अपने सारे सब्जेक्ट्स में अगर 30 या 5 या 40 के ऊपर आ गया, then what will happen? You will be promoted. Yes. Okay. So अगर नंबर कम आया, you won't be promoted. तो नंबर इज द क्राइटेरिया. ठीक है, अलग से तो एग्जाम नहीं होता है प्रमोट करने के लिए क्लास 5 में, क्लास 6 में नंबर्स देख करके प्रमोट कर दिया जाता है. वैसे ही अभी डीयू में क्या होता है, नंबर देख करके एडमिशन हो जाता है. ओके, सो नाउ मूविंग फर्दर विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम, हमारा फिर नेक्स्ट सेक्शन है, दैट इज अगेन द सिटी सेक्शन, बट यहाँ पे कोई ऐसी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन नहीं थी. चीज़ें थिंग्स वर देयर टॉकिंग अबाउट द आप एंड IGIA, तो इसको भी हम छोड़ते हैं. मूविंग फॉरवर्ड वी डू हैव द स्टेट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर, और उसमें एक आर्टिकल निकल करके आया था, दैट इज अगेन रिगार्डिंग द बटरफ्लाई. हमारा कल भी एक आर्टिकल था बटरफ्लाई को लेकर के, जहाँ पे एक चॉकलेट फ्लिटर या बटरफ्लाई दैट वाज फाउंड आउट, एंड बट ये आर्टिकल उससे थोड़ा सा डिफरेंट है. चाइना से आया था. ओके, दैट मींस उस तरह की बटरफ्लाई मोस्टली चाइना में ही निकलते हैं, हांगकांग के एरिया में, बट वो सिक्किम में मिला था, इजंट इट. अभी क्या है, अभी हम लोग एक दूसरे आर्टिकल पे जाते हैं. इट्स अगेन रिलेटेड टू द बटरफ्लाइज. अ टीम ऑफ रिसर्चर्स फ्रॉम मैंगलोर यूनिवर्सिटी in collaboration with the other two institutes had identified and documented 43,118 individuals belonging to 175 species in the Dakshin Kannada region, 25 species being habitat specific out of these 175. तो इसमें क्या है कि रिसर्च कंडक्ट किया है, ठीक है, and altogether 43,000 individual butterflies has been found out in the particular portion, and 175 species, they belong to 175 different species, different groups. Okay, तो वो डाला गया है. Next, moving further, the study over 2 years was done in collaboration with Shyam Prasad Rao, a researcher at Yenepoya deemed to be university, Mangaluru, and Krishnamegh Kunte, a researcher from the National Center for Biological Science, Bengaluru. ये स्टडी 2 साल चला था, and that's what's written over there, and it was in collaboration with Mr. Shyama Prasad Rao, a researcher इस यूनिवर्सिटी के from the Mangalore, and another researcher from the National Center of Biological Sciences. So 2 साल के बाद this identification and all these categorization has happened. Okay, the butterflies were identified at 8 heterogeneous landscapes ranging from coastal sand dunes, कुछ butterfly जो है coastal sand dunes के थे, to agriculture fields. अब सब जगह एक ही तरीके के butterfly नहीं होते, as we have various races depending upon the geography on the globe. कोई Asian होता है, कोई हमारा Mongolian race होता है, so all these there are various races. Accordingly, for the butterflies also, depending upon the geographical, they are varying to semi-evergreen forest on the foothills of the Western Ghat. अलग-अलग colors के होते हैं, इसीलिए तो बोलते हैं सतरंगी और different colors के butterfly. They are all there and they really make it beautiful. The researchers said that butterfly communities that indicate the type and state of a habitat and can easily be conserved. Means we can easily group together and can keep them for a longer time. Conserved by the restoration of habitats with diverse host plants, that they have great public appeal, are easy to work with, and are indicators of a healthy ecosystem, they said. Yes, so the thing that needs to be understood from over here is these butterflies can easily be conserved by restoration of habitats with diverse host plants,
butterflies generally across the various host plants and some of the insects, as you see, host plants उनको चाहिए होता है, उसके along क्या करते हैं butterfly move करते हैं, ठीक है. So this is what has been talked about. They can easily be conserved by restoration of the habitat with diverse different host plants. ठीक है. एंड ऐसे तो सही में बटरफ्लाइज अगर खुले ओपन स्पेस में where you do have a lots of greenery and when they move together in a group they are really a eye catching scene to watch, isn't it? तितलियां पक रही हैं? नहीं पक रही हैं, अच्छी लगती हैं. Okay, so the study showed interesting patterns. एक खास चीज जो निकल करके आया था was some of the most abundant species are common crow, common immigrant, common four-ring, tawny coaster and lesser grass blue. So these are some of the most abundant species that were found. Rest, we do have 3 more articles into this particular page. We won't be entering it into it. The headlines are provided here for illustration, and in case one is interested to have the newspaper या फिर online भी आप इनको search करके देख सकते हैं if the headlines are appealing to you. I have not though included क्योंकि it's again meant for the children. So this broadcast. So going further, the news section of the newspaper. यहाँ पे काफी ज़्यादा articles हैं. We do have n number of articles. Out of them, one of the article well below is weekend storm Jawad drenches the coastal Orissa, which was there into the cover page और इसी को यहाँ पे फिर detail out करा गया है. So Orissa, there was a storm warning, isn't it? How many days back? Almost 2. Almost yes, on I think this was on 4th of December, 2 days back. So Orissa coastal warning. So there was a warning that was issued और अब भी पता चला है कि वो storm आ गया है. आ गया, yes. And आया है, and the fortunate part is that it has weakened, means storm आया काफी तेजी से, but अब उसका प्रभाव धीरे धीरे कम हो रहा है. तो IMD warned, पहले warn किया गया था which 2 states? एक है Orissa. Yeah, and one nearby state. And one nearby state will be. We have 2 states highlighted over here, Orissa and Andhra Pradesh. So northern Andhra Pradesh and Orissa had a warning from IMD, Indian Meteorological Department, who issued such warning after seeing the pattern of the clouds and the pressure, low pressure and high pressure zone that has been created. तो इन्होंने warning create किया था, and accordingly वो storm आया जिसका नाम है Jawad. Okay, वो आया and has generated the first alert for the formation of cyclone Jawad. The cyclone is likely to reach Andhra Pradesh coast on morning of 4th, according to IMD. ये हुआ था, ठीक है, 4 तारीख को, और वो फिर आ भी गया. Today is day. So the cyclone storm did reached. Yeah, the cyclone storm did reached on time and have now weakened during the day. Orissa did not have to carry out large-scale evacuation. A total of 1,500 persons were evacuated to safer places and 300 pregnant women were shifted. So this is what has happened कि mass evacuation was not carried out depending upon given the warning that was provided, or as has been further confirmed कि storm has got weakened down. So this has happened. Department however predicted a significant drop in wind speed, लेकिन अभी तक there is no change into the rain forecast that is there. तो rain forecast is still supposed to maintain in the same way. तो उसके बारे में कोई changes नहीं है. However, wind speed घट गया है, तो cyclone जो हमारा आने वाला था storm that has come down. The effect has come down. Weekend, yeah. And apart from that, और भी काफी इसमें articles हैं. As said, these are the headlines. If you wish through, you may go through. Moving further. Again into the news section, there were all news other articles, but I have not included them based on the complexity and the level to which the things were dealt into the political matters. तो बस headline capture किया हुआ है. उसके बाद हम लोग आते हैं फिर से न्यूज़ सेक्शन में, और न्यूज़ सेक्शन के इस पेज में there is one of the article which was really interesting, और अच्छी बात है that is again related to some of the awards and the prize that is supposed to be imparted. तो ये maths related है, but standard 4 का maths नहीं. This is maths at a very very high level. मुझे भी कुछ नहीं समझ में आया. And then they passed it. It was not passed it.
आगे चलते Let's हैं see. इसमें. This is from the American Mathematical Society. Eminent Indian American mathematician Nikhil Srivastava had been jointly selected for the inaugural $5,000 Cyprian Fayaz Prize awarded by the American Mathematical Society for highly original work in the operator theory. I understood everything except this particular thing. Highly original work in the operator theory. Most of ये operator theory क्या है मुझे भी नहीं पता. But getting further with the news. Along with Professor Srivastava, who teaches at the University of California, Berkeley. The two other awardees are Adam Marcuse and Daniel Spielman. So that is the information about, and he is of Indian American, and that's why ये news हमारा इसमें cover किया गया है. Got it? It's the work developed methods for understanding the characteristic polynomial of matrices, namely the iterative specification method. An illustration of our specification method is shown over here, though not taken out from the article directly. And the methods of interlacing polynomial. So polynomials means the variables raised to the various powers. Variables आपने पढ़ा है, x and y and all those, not studied ना? Variables in math. Yes, math. I have written line. Not about that. We are talking about the variables, और उसमें भी polynomials high order. That's why मैंने कहा कि ये जो maths है ये kiddie math नहीं है. It's of really high order, but because he is an Indian American, and that's why this news is come up, and this is one of the prestigious award. So that's again that gives a sense of pride within us. Moving forward. इसी में हमारा एक इसी पेज में हमारा दूसरा आर्टिकल है ट्रेल टॉक कश्मीरी स्मूथली इनटू द विंटर ओलंपिक्स. So this news is about one of the skier. Do you know ski? The sport? I really love it, but I haven't tried it. In the sand? You tried? No, in the snow it's done. Okay, in the snow. I thought in the sand you tried. Okay. So this is regarding the Winter Olympics जो कि 2022 में बीजिंग में होने वाला है, और उसके बारे में ये आर्टिकल है. Arif Khan, a 31-year-old from the Kashmir Valley, is all set to represent India at 2022 Winter Olympics. He was practicing skiing consistently for 8 or 9 months, a year in about minus 25 degrees centigrade. That is too low. To make it to a coveted sports competition. Skiing करना, it's good. I have done, but not at minus 25. थोड़ा सा करा है, but that was ठीक है. Temperature was not so. It was something around 2 to 3 degrees centigrade. But ये बहुत कम है, और उसमें practice करना continuously for this much time. Participating in winter sports events around the world since 2005, Mr. Khan has represented India more than 127 times. Wow. So he is a seasoned skier. He has been practicing this in world since 2005 winter sports seasons. क्योंकि obviously जहाँ पे snow होगा वहीं पर होगा, desert होगा वहाँ तो होगा नहीं. Yeah. So it takes physical fitness. This is what makes it real a tough game. In fact, it takes physical fitness, the ability to be quick at turns between the gates while going down at the icy slopes at spin. यहाँ तो ऐसे ही ठंडी आ जाती तो हमें तो different कंबल भी और jackets and all those things. That is what we require. Here it has to be practiced in the hardship conditions. I ski 8 to 9 months in a year in Gulmarg in Kashmir. I can ski for just 3 to 4 months because of the change of the snow conditions. And one of the most challenging part of the sport is that it's enduring severe cold. Already this means at minus 25. And training to minus 20 or minus 25 degrees centigrade, Mr. Khan said. So this is what made it the sports challenging. But again, it's good that he is there. He is going to lead us to the Winter Olympics in the skiing for us. Further, इसी में पेज में हमारा एक तीसरा आर्टिकल था ये वाला,
which focuses on fitness spurs Indians to smartwatches. What has happened is the smartwatch. Have you seen that? Yeah. कैसा है? Very beautiful. Do you have it? I don't have it. You don't have I'm it. planning to have. Okay, you are planning to have. For what? Just for having fun. Fun or some sports activities, game activities, something like that. Not really, but fun, and I'll include this also. Okay, I'll include this also. So what has happened is that, driven by the pandemic-induced shift in the consumer awareness about health and fitness, smartwatches are seeing tremendous growth in India, and shipments surged 4 times almost in the quarter of July to September. So what has happened कि हमारा जो एक particular segment है इलेक्ट्रॉनिक का स्मार्ट वॉचेस का एक सप्लाई मीन्स डिमांड रेज एंड अकॉर्डिंग टू द सप्लाई हैज आल्सो कम अप. बहुत ज़्यादा इसकी मार्केट में रिक्वायरमेंट हो गई. क्यों? While the overall wearables market in India, which includes earwear, watches, and wristbands, was 23.8 million units in the third quarter, watches continued to be the fastest growing category with 4.3 million shipments during the period. So ये भी क्या बताता है कि he's telling that there are more things like earwear, watches, and wristbands in the market, and I understand this much. And the sales of smartwatch within the various categories, earwear, watches were there, and wristbands were there. इनका sales, smartwatch का sales काफी ज़्यादा बढ़ गया among that category. So this is what being told. क्यों बढ़ा? Let me tell you. Madhav Seth, CEO of Realme India and President International Business Group, pointed out that while fitness trackers and smartwatches has earlier been popular only among the fitness of tech enthusiasts, these products have become a necessity during the COVID-19 pandemic. तो कोई भी चीज़ एक शुरू में लाइफस्टाइल होती है, लग्जरी होती है, या फिर एक पर्टिकुलर सेगमेंट को आई करती है, जैसे कि स्पोर्ट्स को, गेम्स को, तो वही लोग खरीदते हैं. लेकिन जब वो नेसेसिटी बन जाती है, हर एक लोगों के बीच में आती है कि नहीं, इट बिकम्स अ रिक्वायरमेंट फॉर मी, देन उसकी डिमांड ऑब्वियसली बढ़ जाएगी, और डिमांड बढ़ जाएगी, और ज़्यादा शॉप्स होंगे, और ज़्यादा आपको ब्रांड्स मिलेंगे. एंड बेस्ट पार्ट इज स्मार्ट वॉचेस में हमारे इंडियन ब्रांड्स तो बहुत ज़्यादा हैं. ओके, सो दैट्स गुड. तो दिस इज देयर. तो इट वाज पैंडेमिक कोविड-19 जिन्होंने ये एक बिलीफ बताया कि यू नीड टू बी फिट इन ऑर्डर टू कॉम्बैट कोविड-19. तो ये फिटनेस को लेकर के जो अवेयरनेस आई थी, द रिजल्ट इज एक सेगमेंट काफ़ी ज़्यादा ऊपर पड़ गया. Next. The smartwatch segment is currently dominated by the Indian brands, which had concerned almost 75%. Which has cornered almost 75%. Which has cornered almost 75% of the Indian smartwatch market in the last quarter, compared with 38% in the earlier period. So, what was there? It was that the Indian brands are there. Yes. As you said, there are more Indian brands of smartwatches, which had almost, they just concerned at 75%. Now they are 75%. Last time how many it was there? Last time it was just 38%. 38. So see, almost doubled. So Indian watches just doubled into it. Okay. So that is the smartwatch segment currently dominated by the Indian brands. Okay. So this is what is highlighted over there. Yes, I just wanted to say that this coronavirus has some positives also. Yes, in sense of awareness, people are now more and more aware towards the fitness, keeping themselves fit. So मोह माया से थोड़ा सा निकल करके वो अपने आप पे समय दे रहे हैं. So yeah, that is one of the lessons which COVID has taught us. Yes. Moving towards the next, that is the world section of the newspaper. Herein, इसमें फिर से देखते हैं तो ऐसा कुछ खास नहीं है from the simplistic viewpoint or in general, and hence the headlines are highlighted for the reference. Moving forward, science and technology, इसमें तो भरे पड़े हैं. Very much. So the first article over here is an innovation that can better protect the power grid, and this innovation, which is talking about for the power grid, is going to help us into a longer run. तो
बिजली का कटना, शॉर्ट सर्किट होना, ऑल दीज थिंग्स आर कैप्चर्ड इन डिटेल। और ये चूंकि इनोवेशन है, इनोवेशन मीन्स समथिंग दैट यू क्रिएट। We did it in class one time. What? Like my mom mostly made us draw, but this is not that kind of innovation. Yeah. And some blocks. She taught us how to make something with blocks. They were very critical blocks. ओके, सो यहाँ पे भी IIT जो बॉम्बे हैं, वहाँ IIT सॉरी कानपुर, वहाँ के कुछ रिसर्चर्स दे हैव डन दिस बिकॉज एक प्रॉब्लम है, पर्टिनेंट प्रॉब्लम है हमारे इंडिया में कि दे आर too much heating of the wires, perhaps melting or short circuits होते हैं. So what is being talked about is the innovation into the sector of this stream of power grid. Now what is power grid? Power grid क्या होता है कि we generate power, we generate the power, the electricity, and उसके अपने तरीके हैं. Then we do have the generated power needs to be transmitted. ये जो बिजली आपके यहाँ आ रही है needs to be transmitted, okay, needs to be sent to your respective location, the areas where it needs to be used or consumed. So power grid, what they do is that they transmit the generated power to the location where it needs to be further distributed to be sent to your houses. ठीक है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है कि कभी कभी पावर डिमांड काफ़ी ज़्यादा सर्ज कर जाती है, बहुत ज़्यादा बिजली की ज़रूरत होती है, जैसे कि गर्मियाँ बढ़ जाती हैं। तो what you can see is that अभी तो AC चल रही है, नहीं अभी तो AC चल रही है, मैंने तो स्वेटर भी पहन रखा है। तो एसीज अभी नहीं चल रही है, अभी हीटर चलते हैं, ब्लोअर्स चलते हैं, बट इट इज अ डिफरेंट थिंग, हीटर्स चलते हैं। बट कभी कभी क्या होता है कि अभी जैसे ट्रांजिशन पीरियड होता है गर्मी से ठंडियों के बीच में, सो व्हाट हैपेंस इज दैट एसी व्हिच वाज वन ऑफ द इन हाई डिमांड इन समर्स is replaced by in winters, and that is the geysers and the blowers and the heaters. So what you see is that power peaks up during the extreme winter, during the extreme summer, और इस कारण से what that happens is that the loads are higher. पावर जनरेट होती है तो ट्रांसमिशन में लोड्स मेक इट हायर, और वहाँ पे फिर सर्किट ब्रेकर्स हो सकते हैं, सर्किट ब्रेक कर सकते हैं. सो दीज आर थिंग्स आई डिस्कस. सो हाई करंट सर्जेस इफ अनचेक्ड cause heating of the wires and perhaps melting, and consequent the circuit short circuits into the fire accident. So this is what's been talked about. Researchers from Indian Institute of Technology, that is IIT. Indian Institute of Technologies, that is IIT, Kanpur have come up with an innovation that can help protect power grids against sudden unexpected current surges. That's good. Isn't it good? I was about to say good. So, an innovative variation of the superconducting fault current limiter, that is SFCL, इसका एक innovative variation into this smart SFCL has been used, or it not only shields the grid from large current surges and consequent fire accidents, but also sends when the current surges will happen and warn the system about it. मतलब ऐसा नहीं है कि वो तो normally है कि अगर ज़्यादा लोड आएगा तो उसको बता दिया जाएगा, या उसको अकॉर्डिंग पता होने के बाद वो क्या करेगा कि उसको विल टेक द रेमेडियल एक्शन इनटू इट. बट ये सेंस भी कर सकता है कि कब हमारा पावर बढ़ने वाला है, ठीक है, और फिर वार्निंग भी बता सकता है. जैसे कि हमने देखा कि अभी जो ओडिशा, यस, द साइक्लोन दैट हैज कम, तो IMD वार्नड इट, 1500 पीपल वर इवैक्यूएटेड. क्यों? कोई कैजुअलिटीज ना कम से कम हो. तो उसी तरीके से इट्स अगेन मोर स्मार्ट. Earlier, this used to be the control by the normal. अभी ये बता रहे कि अभी क्या होता है, अभी यही होता है कि सर्किट ब्रेकर्स लगे होते हैं जो कि कंट्रोल करते हैं चीज़ों को. अभी भी पावर सर्ज ज़्यादा आता है तो ओके, पावर सर्ज ज़्यादा आता है तो दे कंट्रोल इट इन अ कन्वेंशनल मैनर which would cut off the current in the event of surge. Yes, surge means? Surge, that means... In the case of surge, in the event of surge, what do you understand by the statement? In the event of surge, something cuts. In the event of surge, I understand that there's an event. Yeah, surge, but surge. Surge, not sudden increase. Sudden. Yeah. So current in the event of surge, the power gets cut. So this is happening right now, and because of the circuit breakers, these suffered from the limitation that if the response time of the current surge was too large, they would fail to be effective. Now it's not that if what will happen? The response time, if it's too large, you will not be able to close your eyes. But if the response time is so you can just close. So it depends. तो अभी के ट्रेडिशनल कन्वेंशनल वेज है उसमें क्या होती है कि द सर्किट ब्रेकर्स डू ऑपरेट, लेकिन अगर रिस्पॉन्स टाइम बहुत कम मिला तो दे मे नॉट
cut off the supply of electricity, the power. इससे क्या हो जाता है, लोड बढ़ जाता है, and then it leads to fire. Okay, and all those hot wires heating the wires and melting. So this all happens. Also, once the circuit was broken, to avoid the incident, the switches had to be manually turned on once again. अब एक बार जब हो जाएगा तो उसको switches को आप manually जा करके उसको on करो. So it's a time taking process. और इससे पावर कट ज़्यादा देरी तक करता है. अब गर्मी में पावर कट गई, वहाँ हमें AC चाहिए होता है, और अब आपको टाइम लग रहा है, बार बार फोन करो, 5 बजे आएगा, 6 बजे आएगा, 7 बजे आएगा, and then it is really not a good scenario. So ये टाइम को भी, पावर कट के ड्यूरेशन को भी ओवरऑल कम कर सकता है. In the same article, power grid needs protection from the sudden surges. Surges means? Surges, again you told that surges means to be this on. Increased jump. Okay, increased hike. Sudden jump into the current that arises due to the shock circuits. So sudden overdrawing of the power. Overdrawing of the power means when you draw, all of a sudden you draw more and more power. एक पानी, बहुत प्यास लगा, पानी पी लिया, तो sudden intake of the water, ठीक है, because you are too much thirsty. Or excess power generated due to the falling demand. So these surges cause heating of the wires and perhaps melting and fires. So कैसे superconductor के use को कर करके they have did the innovation. So now we'll be talking about the innovation. Using superconductors in the last decade, mainly in developed countries, a new way to tackle this situation is being explored using superconducting fault current limits, that is SFCL. So last decade में what you have seen, the use of superconductor has been used into the developed countries, और इसका यूजेस हमें सर्किट लिमिटर्स के फॉर्म में देखने को मिला है, ठीक है. सो दिस इज टेकन फ्रॉम देयर, द कॉन्सेप्ट इज कमिंग फ्रॉम देयर, द बिहेवियर ऑफ द सुपरकंडक्टर्स एंड द ऑपरेशन ऑफ एन एसएफसीएल इज वेरी रैपिड एंड ऑटोमेटिक. हमने जैसे बोला कि कन्वेंशनल केस में क्या होता है, टाइम लगता है, देयर इज अ रिस्पांस टाइम, एंड अगेन यू नीड टू मैनुअली डू इट. हियर इट इज वेरी रैपिड एंड ऑटोमेटिक. कितना भी किसी तेजी से अगर आ जाता है, यू कैन जस्ट रिएक्ट टू इट. अभी जैसे कि हमारा XUV 700, it can sense and it can stop your car when it sees an obstacle very close to it. तो कार भी अपने आप स्टॉप हो जाएगी, आपको ब्रेक लगाने के पहले कार अपने आप ब्रेक लगा देगी. And something else is there, like in some of the cars, you put hand by mistake, if you put hand inside this glass window, then it will not close full, then your hand will not get. तो हमारी गाड़ी में भी है, सेंसर लगे हुए हैं, अपने आप जो शीशे नीचे चले जाते हैं. That is what you're talking about ना? And also about sunroof. Yes, the sunroof also. So this is what we are telling. It's very rapid. It's automatic. You need not be clean, and also the switch is on. So once the fault current reduces and the current flow returns to the below threshold value, the resistance of SFCL automatically generates and goes down to 0, और फिर से चीजें resume होने लगती है. The imported SFCL device cost around €1,000,000. अब यहाँ पे एक वैल्यू एडिशन है, कॉस्ट बेनिफिट, मार्केटेबल, कैसे हम इसको कमर्शियलाइज करेंगे, इस टेक्नोलॉजी को इनोवेशन किया गया है, एक चीज़ बनाई गई है जो कि बहुत अच्छी है, लेकिन इसके पीछे जो सेमीकंडक्टर्स लग रहे हैं, जो डिवाइसेस लग रहे हैं, वो बहुत महंगे हैं. तो वो लग सकते हैं या मुश्किल है? अगर है तो लग सकता है, अगर नहीं है तो महंगे हैं, तो फिर तो अगर हमारे पास है तो अब लगा सकते हैं, लेकिन महंगे हैं अगर तो समझ नहीं आ रहा, लगा नहीं लगा. जी नहीं, अगर चीज़ें महंगी होती है तो फिर उस इनोवेशन का उतना ज़्यादा हम यूज़ नहीं कर पाते, उसका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं हो पाता है, वो वाइडली स्प्रेड नहीं हो सकता, वो बहुत लिमिटेड स्केल पे उसका यूज़ होता है, ठीक है. तो किसी भी इनोवेशन को यूज़ करने के लिए उसका कमर्शियलाइजेशन बहुत लार्ज स्केल पे जाकर के उसका इम्प्लीमेंटेशन होना बहुत जरूरी है, एंड दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट, एंड द कॉस्ट इज वन ऑफ द डायनामिक्स. Business commercialization is one of the dynamics which makes an innovation transferred to the vast people. Okay. So over here, the best part is the prototype smart SFCL developed by the Professor Banerjee group from the IIT Kanpur cuts the cost by almost 50 to 60%. That's good. That's really good. You are halving down, okay, yes, the cost. So you can benefit more. You can carry the benefit more to the users. ठीक है. नेक्स्ट वन, इसी में हमारा फिर सेकेंड आर्टिकल ऐसे ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो भरी पड़ी है, जो कि चीज़ें कॉम्प्लेक्स है थोड़ी, बट इट कैन बी सिंपली, समझ में आ रहा है ना? हाँ हाँ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज माय फेवरेट, बट
नहीं, बहुत सारे टर्म्स हैं जो कि कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स हैं, लेकिन एसेंस ट्राई टू गेट इट एंड देन यू विल जस्ट Let's try to get it. say it. Yeah. So next is study find mechanism of blood clots after giving Oxford vaccine. This is about the COVID-19 vaccine. और हुआ क्या है, हमने जब देखा कि वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हुआ तो वैक्सीन बनने में हमने बहुत जल्दी वैक्सीन बना लिया इस बार। एक नहीं ना जल्दबाजी है, बहुत जल्दी बना लिया। वैक्सीन बनने में इतना टाइम जनरली नहीं लगता है, ज़्यादा टाइम लगता है। हाँ, इससे ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन बिकॉज ये पैंडेमिक अपना ग्रिप बढ़ाया जा रहा था, वेरिएंट्स इसके बढ़ रहे थे। अभी भी हमने देखा कि डेल्टा के बाद एक नया वेरिएंट आया ओमिक्रॉन। काफ़ी देशों ने बहुत ही मशक्क़त के बाद अपनी अपनी वैक्सीन बनाई, लेकिन उसके बाद पता चलता है कि एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन थी, मींस जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बनाई थी, और हमारा जो उसका काउंटर पार्ट है कोविशील्ड वैक्सीन, एक्सक्यूज मी, उसके साथ प्रॉब्लम क्या निकल के आई थी कि बहुत रेयर केसेस में ब्लड क्लॉट हो रही थी। यू नो ब्लड क्लॉटिंग मतलब ब्लड कम हो रही है, नहीं, क्लॉट कर जा रही है। व्हेन यू हैव अ कट इन योर हैंड और समवेयर, तो निकल जाएगी, ब्लड ट्राइज टू कम आउट एंड इट कम्स आउट, बट डज इट कीप्स ऑन कमिंग आउट? नहीं, कॉटन से रुक जाती है। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द कॉटन वो रुक जाती है। ब्लड के अंदर क्या होता है कि दे हैव अ टेंडेंसी टू कोagulate, वो जमनी शुरू हो जाती है इन द ओपन बिकॉज सम ऑफ द केमिकल्स दैट इज इंपॉर्टेंट टू इट, और तब वहाँ पे क्लॉट बन जाती है। तो जब तक वो लिक्विड रहती है तब तक वो बाहर निकलते रहती है। जैसे ही वो थोड़ा सा सेमी लिक्विड होकर के क्लॉट बनी तो अंदर से ब्लड का निकलना बंद हो जाता है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड क्लॉटिंग। गॉट इट? तो ये वैक्सीन लेने से पता चला था कि ब्लड क्लॉटिंग की जो समस्या है वो ज़्यादा हो रही थी। क्लॉटिंग होना अच्छी बात है कि बुरी बात है? अगर आपके हाथ कट जाए तो अच्छी बात होगी, लेकिन अगर ऐसे अच्छी बात ऐसे कैसे? अगर आपके हाथ कटे ही नहीं और ब्लड क्लॉट हो जाएगी तो शरीर के अंदर, आपकी ब्लड के अंदर लिक्विड जो है, लिक्विड फॉर्म में ब्लड है, वो क्या हो रहा है कि जगह जगह जाकर के सेमी लिक्विड हो रही है, सॉलिड हो रही है, तो थोड़ी खराब हो रही है। ब्लड ट्रैवल कर पाएगी उतनी अच्छे से? नो ना, तो मुसीबत हो जाती है वहाँ पे, फिर ऑल ऑफ अ सडन वी फील स्ट्रोक्स। ठीक है, तो ये रेयर केसेस में फाइंड किया। काफ़ी लोग मरीज से दे एक्सपायर, दे डाइड ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस क्लॉटिंग, बिकॉज एकाएक ब्लड क्या हुआ, क्लॉट कर गया। डरावना है। तो इसीलिए वैक्सीन्स बनती हैं और इसके असर्स होते हैं। वी डू हैव द various aspects into it. The thing is that the researches keeps on going on, and then you do have a second generation vaccine, third generation vaccine, means in advanced and advanced vaccines. ठीक है, and that's how things keeps on evolving and growing. तो इसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। This is regarding the कोविशील्ड वैक्सीन और द एस्ट्राजेनेका और जो हमारा नॉर्मल वैक्सीन है, और भी उसके बारे में बताया गया इन डिटेल। टर्म्स काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं, बट उसको नहीं जा करके हम लोग ट्राई करेंगे एसेंस को लेना। ओके, सो लेट्स गो थ्रू। मल्टी इंस्टीट्यूशनल स्टडी पब्लिश्ड on December 1 in the journal Science Advances has revealed for the first time that the mechanism responsible for blood clot arising from thrombosis with thrombocytopenia syndrome, that is TTS, thrombosis with thrombocytopenia symptom following vaccination with AstraZeneca vaccine. तो एक सिम्टम है उसको अराइज कर देता है, ओके, इफ यू टेक द गिवन वैक्सीन। ठीक है, ये क्या है? तो जस्ट ट्राई टू रीड। thrombocytopenia syndrome causes low platelet count, causes low platelets count। हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स यू हैव सीन, हर्ड आरबीसीज एंड द डब्ल्यूबीसीज, व्हाइट ब्लड सेल्स, उसी तरीके से प्लेटलेट्स भी होते हैं। तो ये जो सिंड्रोम है ना, ये प्लेटलेट काउंट को कम कर देता है। ठीक है, a low number of platelets, blood cells that help prevent blood loss when the vessels are damaged, can result in no symptoms or can lead to an increased risk of bleeding or in some cases clotting. So this is what has been explained over here, that a low number of platelets, blood cells that help prevent the blood loss when the vessels are damaged, can result in no symptom or can at times increase risk, okay, or in some cases it can clot. तो इसका रेयर है इफेक्ट, देखते हैं वो इफेक्ट क्या और कैसे है। तो thrombosis with this thrombocytopenia syndrome is a very rare serious adverse effect
फॉलोइंग वैक्सीनेशन, अगर आप ये वैक्सीनेशन लेते हैं तो। और आपको पता है कि वैक्सीनेशन जनरली वी इनहेरिटेड फ्रॉम द स्पीसीज, द मंकीज एंड द चिंपैंजीज एंड ऑल, तो उनसे लिया जाता है या फिर कुछ दूसरे एनिमल से लिया जाता है और उनको मिला करके कुछ कुछ बनाया जाता है। इवन आई डोंट नो इन डिटेल, सॉरी आई आल्सो डोंट नो, बट यहाँ पे भी क्या है कि इस केस में, हमारे केस में अगर हम थ्रोम्बोसिस और थैलेसेमिया सिंड्रोम के बारे में बात करें तो इफेक्ट फॉलोइंग वैक्सीनेशन यूजिंग अगर चिंपैंजी एडनोवायरस दैट इज Y25 या फिर ह्यूमन एडनोवायरस टाइप 26 या फिर ह्यूमन एडनोवायरस टाइप 5 अगर लिया जाता है तो दिस एडवर्स इफेक्ट मे कम इनटू, ठीक है। सो दिस इज व्हाट बीइंग टॉक्ड अबाउट। नेक्स्ट, In June 2021, scientists from Germany and Norway reported that antibodies that activated platelets, a blood component involved in clotting, were seen in young people who developed the clots after vaccine with AstraZeneca vaccine. But the precise mechanism means the exact mechanism. Precise means exact or the detailed mechanism. But the precise mechanism behind it was not known then. Yes. So what has happened is, now I have two flags over here. First, which is Germany, which is Norway. I'll tell. Yeah. The black red. I think it's the blue red. Okay, sorry. First I'll tell the blue red is Norway. Okay, this is Norway. Yeah, and then black, red, and yellow is the Germany. How? I have a little trick in remembering Norway. Yeah. So Norway, you can see, you just have to remember, in Norway you have a plus sign. Okay, the cross. Almost a cross sign, and then the cross sign is blue. Okay. And Germany don't have so many tricks. I mean, not so many. Okay, that's fine. I cannot understand that. Okay, moving forward. So in June 21, scientists from Germany and Norway reported that antibodies that activated the platelets, because once you give the antivirus, once you give these injections, so what happens is that the antibodies gets created over there. So antibodies that activated the platelets, a blood component involved in clotting, was seen in young people who developed the clots after vaccination with AstraZeneca. But the precise mechanism कैसे हुआ था वो नहीं पता, आगे चलते हैं. Next, AstraZeneca vaccine and the Indian counterpart Covishield. यहाँ पे we do have the Covishield, we do have the Johnson and Johnson, we have the AstraZeneca. Use the chimpanzee adenovirus Y25, the three adenovirus that we talked about, chimpanzee, the human type 26 and the human type 5. So AstraZeneca में chimpanzee का होता है, while the Johnson Johnson vaccine uses the human adenovirus 26. Sputnik vaccine uses both human adenovirus 26 and human adenovirus 5 as vectors to carry the spike protein. तो ये था. How many vaccines do you know? What are the various vaccines? The vaccines Sputnik. Okay. That you and my mother has taken. Yeah. And then then after heard about Covishield. Yeah. Covaxin was my Covaxin, favorite. yeah, biotech from India. It's my favorite. Okay. Covaxin. And Johnson Johnson, I don't know. I just know Johnson baby powder. Okay. So this is what being talked about, the various vaccine and which adenovirus it uses. So vaccine induced immune thrombotic thrombocytopenia, VITTT, that is depicted over here, only happens in very extreme rare cases because a chain of complex event needs to take place to trigger this ultra rare side effect. So this clotting is a very rare side effect, and we hope our findings can be used to better understand the rare side effects of these new vaccines and potentially to design better and the improvised version of the same to counter this global pandemic. Dr. Alan Parker added. So थोड़ा सा और है इसमें, sorry बहुत ज़्यादा मैंने इसको थोड़ा लेंथ में बता दिया था, but this is related to Omicron. ठीक है, so not exactly with respect to what we are just about. इसी हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये तीसरा आर्टिकल है. Okay, was Omicron designated a variant of concern in haste? Now, what do you mean by haste? Haste means like if you're like that, if you're not taking much of it like serious. जल्दबाजी में means too quick, fast.
You just take a decision rapidly without evaluating its pros and cons and the consequences. You just take it in haste, and there's a haste makes waste. yeah. So उसी के बारे में है कि there is a question and this will be nicely addressed into this section, और इसीलिए हिंदू न्यूज़पेपर में डिटेल एनालिसिस इन्वॉल्व होते हैं. सो बहुत और उसमें कहते हैं थिंग्स आर गेटिंग वेरी मच क्लियर, दो द टर्म्स आर देयर, और इसी के लिए आई ट्राई टू थॉट ऑफ कि बच्चों को पता नहीं समझ में आएगा कि नहीं समझ में आएगा. दैट्स व्हाई आई थिंक वी बोथ आर हियर, तो आपको मैं समझा सकूं, आपको थोड़ा सा बता सकूं. इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि सब कुछ आपको पता चले, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें अगर समझ में आती है तो यू कैन जस्ट ग्रो ऑन एंड ऑन इफ यू जस्ट फॉलो दिस. ठीक है, क्योंकि न्यूज़ में एंड पैटर्न इज अ पैटर्न एसोसिएटेड. ऐसा नहीं कि आज कुछ आई कल वो नहीं आएगी. दिस ओमिक्रॉन हैज बीन देयर ट्रेंडिंग फ्रॉम पास्ट 5 days, isn't it? Delta variant troubled us, isn't it? Troubled the globe. COVID-19. तो ये चीज़ें हैं, धीरे धीरे आ रही है. More we know, the better things becomes, and we can say yes, it's not. We can debate, we can argue. तो वही एक यहाँ पे दिया हुआ है. Was Omicron designated a variant of concern in haste? क्या जल्दबाजी में हमने इसको बता दिया कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, प्रॉब्लमेटिक है, बहुत से म्यूटेशंस हुए हैं वायरस के, लेकिन डेल्टा वेरिएंट was real variant of concern. I didn't even heard of it. I think I heard and forgot of it. Yeah, Delta variant that came in India during the April and May season. What happened over there? I forgot. We will just see. Okay. So on November 26th, अभी just पिछले हफ्ते, the World Health Organization designated the newly identified SARS-CoV-2 lineage B 1.1. 529. Yes, with a whopping 32 mutations in the spike protein alone as a variant of concern, and named it Omicron, making it 13th lineage to receive a Greek letter. So this is the Greek letter that was provided as a nomenclature. Nomenclature में ज़्यादा नहीं जाएंगे, अभी आगे बढ़ते हैं. Next one. The Greek letter nomenclature of variants were introduced by WHO, that is World Health Organization, in 2021 as a uniform system of naming variants of interest and concern. So Greek letters are mostly provided for the variants who are of interest or a concern. ये interest concern क्या है? Interest variant of interest, variant of concern. Interest से ये समझ में आता है. We understand that interest means good. We have interest in something. Why we have interest in something? Because you wanna know. This is science and technology. It appeals to you. It has got some characteristics. कुछ खास तो है. तब तो interest है, interesting है. और concern तेरी के ये तो problem है, ये तो दिक्कत है. ठीक है, तो इसी के बारे में थोड़ा सा देखते हैं. इंटरेस्टिंग है, so just be with us. Bypassing stage. तो हुआ क्या था? With the designation of the Omicron as a variant under monitoring and further as a variant of concern, within a short span of 2 days, the World Health Organization bypassed the stage of initially designating it as a variant of interest, which is a significant departure from the precedents followed by other variants of concern in the past. तो एक जब कुछ म्यूटेशन निकल करके आता है, then what happens is, what I understand is कि उनका we address them, we say that this is of a particular characteristic, so we need to do this with this. This is of a particular characteristic, we need to do something with this one. तो यहाँ पे सबसे पहले था वेरिएंट अंडर मॉनिटरिंग, खास निकल के आया, तो इट कम्स वेरिएंट अंडर मॉनिटर. मॉनिटर होना है, मॉनिटर करना है उसको देखना है, नहीं यार कुछ तो गलत हो रहा है या कुछ तो ऐसा क्यों थोड़ा अटपटा हो रहा है. यस, उसको आप मॉनिटर करते हो. ठीक है, एंड देन आप मॉनिटर करते हो और उसमें निकल नहीं नहीं सब ठीक है यार, ऐसे ही है, इसका तो वैसे ही है. लेकिन अगर कुछ खास निकल के आता है, इंटरेस्ट, अरे यार कुछ तो स्पेशल है इसमें. सो यू जस्ट गेट अ बिट मोर क्यूरियस, and then you find no, it's a concern, there's something special particularly about this. So ये different phases होते हैं. तो ओमिक्रॉन के साथ क्या हुआ था कि it was a variant under monitoring, but unfortunately it was not tagged as a variant of interest. उसको जल्दी से हमने बता दिया वेरिएंट ऑफ कंसर्न within 2 days. ठीक है, क्या ये गलती थी? Was it made in a what is a decision that was made in a haste by WHO? यही वो आर्टिकल बताता है completely. Okay, so next page में जाते हैं. So यहाँ पे क्या है? We have a delta variant which was again a variant of concern and an Omicron variant जो कि अभी का variant है which is again tagged as a variant of concern. इन दोनों के साथ क्या हुआ था? Just have a relative. I will go for the delta variant, you go for the Omicron variant. Okay? Okay, 1 minute. I'm just trying to set this up. Yeah. Yes. So the designation of delta variant took about 6 weeks from the reporting of the lineage to the designation of lineage as a variant of. So variant of concern बनने में इसको 6 week लगे थे. ठीक है? From the reporting, मतलब variant of
इनिशियली मॉनिटरिंग से VOC तक जानने में इसको 6 हफ्ते लग गए थे. What about Omicron? Omicron was designated within a week of detection. Detection means identification. Within the week it was identified. Okay. Detected, it was noted. Detection of a lineage that its name is B.1.1.529. So, monitoring, it led to VOC only within a week. 1 week, जो कि डेल्टा को 6 weeks लगे थे, इसको 1 week में ही कर दिया गया था. And that's why this question is coming. जल्दबाजी थी क्या? Next, Delta in contrast was the first designated as a variant of interest in April this year. And was further upgraded to variant of concern on May. So April में उसको पहले interest बताया, फिर उसको May बनाया, taking into consideration the emerging evidence of the transmissibility, epidemiological correlation from India as well as the experimental evidence from across the globe. So a lot of data were given to, they were looked into, they were researched, और तब उसको finally April से जाकर के May में उसको हमने concern बताया. हमने उसको interest पहले करा और उसके बाद उसको concern बताया. So these are the 3 levels that have been talked about, 3 levels that have been talked about. Variation, इसके ऊपर आता है variant of interest. No, इसके ऊपर monitoring, तब interest and concern, और इसके बाद भी अगर कुछ problem आता है, that is the variant of high consequence. अब अगर पता चलता है कि Omicron really में threatening है, then it's a variant of high consequence, like an alarm bell. Okay, so Omicron in contrast was designated means labeled. Okay, was designated as a variant under monitoring on November 24th and was classified as a VOC 2 days later. Within 2 days it was classified as a variant of concern. So the rapid pace, this one continue. The rapid pace at which the WHO World Health Organization designated Omicron as a variant of concern was a decision that did not come out of haste. Main point of article. Yes. But was based on concrete scientific evidence, means solid based scientific evidence. Concrete scientific evidence which came early from Africa, although further efforts were for evaluating means to evaluate, to find, to get it checked. Evaluating the variant shall continue to gain more evidence. So what did you get from this one? I got that the main point I got over here, that it's not they did not come from haste. मतलब जल्दबाजी में इसको नहीं किया गया था, सोच समझ के ही बोला गया है. क्योंकि इसके बारे में data were there, the evidences were there, and they were really collected very fast and they were studied into more in detail in a quick short time. Delta के बारे में maybe the preparedness of the evidence of the data was not so much clear. Okay, so this was being talked about. The timely detection of Omicron is predominantly attributable to the routine genome sequencing effort of network of the genomic surveillance in South Africa, an elaborate genomic and epidemiological surveillance network in South Africa comprising over 10 laboratories and academic institutions having a rich experience. तो अफ्रीका, साउथ अफ्रीका की कुछ खास capabilities थी इस genomic sequences में, they helped a lot, and because of that the thing is that we were able to identify very quickly in advance कि ये variant of concern है. तो चीज़ अगर बहुत अच्छी होती है तो चीज़ आगे बढ़ती है. इसका मतलब ये नहीं कि चीज़ अगर आगे बढ़ गई, things move at a very fast pace, there is a mistake, some question into it. Okay, but the thing is that अभी भी the spreading, the Omicron is spreading really very fast. लेकिन the cases that is being reported, they are not so serious, they are mild. Okay, so that is all into this particular article. Though the last one over here, 3 factors over there. Typically the variant is designated as variant of concern if it has evidence that supports one of the possible 3 factors when we consider variant or a particular variant as a variant of concern. Okay? So the 3 factors are increase in transmissibility or detrimental change in COVID-19 epidemiology. If the transmission from one person to another to another to another to another is very fast, then okay? So that is very fast, then okay? Or detrimental change in the COVID-19 epidemiology. If what is doing mind by epidemiology? Epidemiology is
the study of the people. So if the COVID-19 has got an adverse effect onto the people's study, when there is impact is studied onto them, then if there is a detrimental change, it's a worsening change, detrimental, then this is concerned as a variant of concern, adverse variant of concern. Increase in virulence or change in the clinical disease presentation. ठीक है, so this pattern is also coming into changing the clinical disease, the way it's been presented. तो यहाँ पे भी उसको variant of concern माना गया. Decrease in effectiveness of public health, तो भी हम उसको variant of concern से address करेंगे. ठीक है, so these factors are there. ठीक है, so moving forward, बहुत ज़्यादा हमने टाइम ले लिया इस आर्टिकल पे, अब आगे चलते हैं. नेक्स्ट पेज इज FAQ and one good article, and this is related to last article of this entire newspaper which we will be going through to some extent. ठीक है, तो इसी के लिए मैंने इसको भी थोड़ा सा डिटेल में कैप्चर किया गया है. दिस इज अगेन मुल्ला पेरियार डैम, जो कि हमारा बहुत दिनों से इनफैक्ट सालों से चर्चा में, पता नहीं कब तक रहेगा. सो की इन्फॉर्मेशन, पहले तो व्हाट इज द डिबेट ऑन द डैम सेफ्टी बिल. अब ये इंपॉर्टेंट है हिंदू न्यूज़पेपर का बन सके, एक चीजों को क्वेश्चन के फॉर्म में डाल करके, एंड देन इट गिव्स एडिक्वेट रिस्पॉन्सेस एंड आंसर्स. इवन द अदर न्यूज़पेपर आल्सो डू, बट इतना इलैबोरेटली आई डोंट नो वेदर दे डू. इंडियन एक्सप्रेस में भी है, द टाइम्स ऑफ इंडिया, वेल उसमें भी रहता है टाइम्स एंड सब अदर आर्टिकल्स एंड सब अदर इंफॉर्मेशन रियली वेरी, बट पता नहीं उसमें बहुत सी एक्स्ट्रा चीजें भी होती है, इतनी ज्यादा एड्स होते हैं, क्लासिफाइड होते हैं. गॉड. सो द स्टोरी फॉर द डैम सेफ्टी बिल 2019, which provides the surveillance, inspection, operation and maintenance of all the specified terms of the country, has been debated for decades. इस लोग पता नहीं कितने सालों से चल रहा है, कितने सालों तक चलेगा. ठीक है, पहले डिबेट में था, बट ये बिल पास हो गया है. पास हो गया तो भी थोड़ी मुसीबत है इसमें. फाइनली गॉट द नॉड ऑफ द राज्यसभा ऑन थर्सडे December 2, जो कि अभी आफ्टर 4 आवर डिस्कशन लोकसभा में 2019 में ही पास हो चुका था. ठीक है, तो फाइनली ये डैम सेफ्टी बिल हमारा पास हो गया. ये है क्या, मैं जो बोल रहा हूँ वो है क्या, वो है क्या? Dam safety bill. Today I searched it. Yeah, a little bit information. They tell that this dam is, थोड़ा picture देखा था. They tell that this dam you can operate maybe. What happened? No, we will see. Obviously, it's not expected that you should be going through all these things. But अभी हम बात करते हैं तो बहुत सी डिटेल, बहुत से टाइम, बहुत से नंबर्स मिलेंगे, उनको भूल नहीं पाना. मेन चीज को ध्यान रखना कि है क्या. ओके, सो व्हाई इज द लॉ ऑन डैम सेफ्टी रिक्वायर्ड. ये बिल जब पास हो गया तो इट विल बिकम अ लॉ. ओके, बिकॉज इट बीइंग पास फ्रॉम द लोकसभा एंड द राज्यसभा बोथ. ठीक है, तो अब ये लॉ बन जाएगा, कानून बन जाएगा. तो कानून बन गया तो क्या, तो हमें भी आगे से यही करना होगा. यस, लोगों को आगे से इस कानून को फॉलो करना पड़ेगा. अभी फार्म लॉ रिपील हुआ, लॉ बना था ना, बट इट गॉट रिपील, कॉल बैक. सब लोग कॉल बैक, बहुत कम लॉ होते हैं जो कि कॉल बैक होते हैं. ठीक है, अच्छा रहे. एक और लॉ था, like they said that this students can, if they are in grade 12 and they pass the exam, they can become doctors. That is the NEET. उसके बारे में साउथ में एक लॉ बन रहा है, कर्नाटका particularly, the admissions regarding it. Yes, we want to make it as a law जो कि you need not to be given the competitive examination, if the marks are there, and with the help of the marks you can try and get admission into the MBBS doctorate. So that is there. Yeah. So India ranks third globally with 745 large dams in operation. नाम याद है सबका? मुझे बस एक डैम का याद होगा, मुल्ला पेरियार डैम. हमारा इडुक्की तो डिस्ट्रिक्ट है जिसमें मुल्ला पेरियार डैम है. ओके, बट वी हैव 5700 लार्ज डैम्स, इससे भी बहुत ज्यादा डैम्स है. ठीक है, तो लॉ है क्या, उसके बारे में बात हो रही है. 67 dams were built prior to the 20th century and 1039 dams during the first 70 years of the 20th century. मतलब बहुत से डैम तो 19वीं सदी के हैं. ठीक है, 100 साल पहले के डैम है. और 70 और जो कुछ डैम है, 70 डैम that was into the first 70 years of the 20th century. उसमें जो है first 70 years जो थी 20वीं सदी, मतलब 1900 से लेकर 1970 तक, उसमें से 1000 डैम तो हैं जो कि इस एरिया के हैं. तो मतलब ऑलमोस्ट 5700 में से आप समझ लो 1100 डैम्स आर वेरी ओल्ड. ऑलमोस्ट 20% डैम्स आर वेरी ओल्ड.
ओके तो उनके बारे में कुछ खास है. सो फॉर स्टेक होल्डर्स इन द वाटर सेक्टर, एजिंग ऑफ द डैम इज मीन्स गेटिंग एज, बूढ़े हो रहे हैं, जैसे मेरे बाल सफेद हो रहे हैं. No, not like this. This is nothing. No. Okay. So dams in the country has been a matter of concern. Jal Shakti Minister Mr. Gajendra Singh Shekhawat told the Rajya Sabha that since 1979 there were 42 instances of dam failure. तो चीज़ें ज़रूरत होती है, ऐसे चीज़ें बदलती हैं तो आपको एक you need to form something to regulate it, to understand it, ठीक है, so that they can be put back into the track. The latest being the Annamaya Reservoir in Kadapa district of Andhra Pradesh that led to the death of 20 people in November 2021. ठीक है, तो अगर डैम इतनी पुरानी है तो नहीं, डैम अगर पुरानी है तो उसमें कुछ मिसहैपनिंग्स, फेलियर्स हो सकती हैं. They may weaken down, and because getting weakened down, you may see the water coming out all of a sudden, and that may get flooded. The region may get flooded, and people may die because of this flooding. A sudden flooding, in fact. You should open the dam, but you should give the warning. उसके बाद लोग evacuate कर जाते हैं, वहाँ से निकल जाते हैं. जब पानी चला जाता है, then again come back. We learned this. Yes, where? And in SST, I just wanted to tell some information. They are sometimes known as multi-purpose projects. And these dams, they are known as but when these open, they are sometimes they are very harmful, environmentally harmful. They are. Okay, maybe related to something else, but ठीक है, I'm not able to get it. चलते हैं कंटेंट की तरफ. So this is what has happened. So नियम क्यों जरूरी है? Almost 20% डैम्स पुराने हैं, जर्जर हैं और फेलियर्स भी हुए. 42 इंस्टेंसेस हुए हैं हमारे 1979 के बाद से, ठीक है, जहाँ पे फेल हुए हैं डैम लीडिंग टू डेथ. सो इवन दो द सेंट्रल वाटर कमीशन दैट इज CWC, जिसकी फोटो यहाँ पे है, along with the Central Dam Safety Organization has been functioning as an apex body to advise status on the issue of dam safety. There is no specific central law that governs the subject. तो कोई स्पेसिफिक सेंट्रल लॉ नहीं है. ओके, दो ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज द कमीशन एंड द सेफ्टी डैम ऑर्गेनाइजेशन. दे आर देयर बट दे आर फंक्शनिंग बट नॉट स्पेसिफिक सेंट्रल लॉ. इट्स अ स्टेट सब्जेक्ट. स्टेट मीन्स स्टेट, केरला, तमिलनाडु, डिफरेंट स्टेट का सब्जेक्ट है, बट सेंट्रली देयर इज नो सच प्रोविजन एज सच. तो गिवन द सिचुएशन वेयर द ओनरशिप ऑफ द डैम एंड द मेंटेनेंस falls under the purview of the states. Okay. Next, within the same article, which dam are included in the bill? इस bill में जो कि law बनने वाला है, कौन-कौन से dam include किए हुए हैं? The bill covers those dams having the height of over 15 meters and between 10 and 15 meters with certain stipulations. 15 meters is a general criteria. उसके बड़ी जो height है, they are dams included into it. बट अगर 10-15 में भी अगर कुछ खास डैम है, सर्टेन कंडीशंस दी हुई हैं, तो फिर स्टिपुलेशंस, सर्टेन कंडीशंस, तो फिर दे आर आल्सो कवर्ड इनटू दिस लॉ. ओके, नॉट ऑल द डैम्स. गॉट इट? सो व्हाई दिस बिल बिकम कंटिन्यूअस? व्हाई दिस बिल केम इनटू? प्रॉब्लमेटिक क्यों ऐसे आया? सो इन द लास्ट 10 years सेवरल स्टेट्स इंक्लूडिंग योर कर्नाटका, केरला, your Andhra Pradesh and Tamil Nadu, Karnataka, Tamil Nadu, Kerala, all these four southern states opposed the legislation on the ground that it encroached upon the sovereignty of states to manage their dams. तो प्रॉब्लम इसलिए है कि यार ये मेरा चीज है. Do you share your things with Soya? Yes, I share. Always? I share. The Papa, sometimes there is a clash and conflict, then what does Papa say? But it's mine. Even Soya says the same, it's mine. तो ये जो बात है ना, मेरी है और वहाँ पे क्लैशेस इंटरेस्ट हो जाता है, फिर कॉन्फ्लिक्ट होता है, बोलता है कि फिर पापा को बीच में आना पड़ता है. सो ये डोंट टेक दिस और दिदा गिव इट टू सोये. ओके, तो बीच में किसी को आना पड़ता है. तो यहाँ पे स्टेट्स में भी ना, केरला में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में आपस में ही काफी ज्यादा मतभेद होते हैं. तो बड़े हैं ना. हाँ, तो फिर भी सब तो माइन, मेरा नहीं, मेरा क्रेयॉन है. एंड देन मेरा क्रेयॉन है तो मेरा डैम है ना. Why you should? No, I just the fight happens. Actually, she loses her things and then takes mine without my permission. That's right. Okay, तो ठीक है. तो यहाँ पे भी सेंटर they don't want, these southern states don't want. हम अपने में लड़ेंगे, दोनों. पापा को नहीं आने देना बेटा. और कभी बोलते पापा आ जाएंगे तो अच्छा रहेगा, मेरा सुनेंगे ना. तो कभी कभी होता है पापा को नहीं आने देना, अपने में लड़ लेते हैं, गुट कर लेते हैं.
या फिर तो दिस इज दैट डोंट वांट द सेंटर शुड कम इनटू. ओके, सो फर्दर this critics. Critics means the ones who evaluates the things from a perspective of negativism involved into ऐसा क्यों यार ये ठीक नहीं है. They always are critics. अच्छा भी करोगे तो यार कुछ तो प्रॉब्लम है. आपके साथ हुआ था. Critics also raised the constitutional validity of the legislation in the light of water being a स्टेट सब्जेक्ट. तो क्रिटिक्स भी बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, वाटर तो एक स्टेट का मुद्दा है, राज्य का मुद्दा है, सेंटर इसमें क्यों आएगा? खिलौना तो तुम्हारा है, पापा खिलौना का क्या करे, खरीद दिया काम खत्म. तो बस ना, पापा को खिलौने में क्या परवाह, पापा पढ़ाई के बारे में बात करेंगे, टीवी के बात करेंगे, खाने के बारे में बात करेंगे, इसलिए खेलने के बारे में बात करेंगे, खिलौने पापा क्यों आ जाते हैं? Is it? But here the things are different. So the silence on the payment of compensation to people affected by the dam projects were cited as another shortcoming. So this silence was cited as another shortcoming. Okay, so even ये चीज था. Moving further, Tamil Nadu has also been a critic of the legislation in the fears. तमिल नाडु को क्या डर लगता है यार, मेरा तमिलनाडु से प्रॉब्लम क्या है, केरला में उसके डैम है और पानी तमिलनाडु को मिलता है. दे ऑपरेट इन द मेंटेन और डैम केरला में, और केरला में जब पानी ज्यादा हो जाता है तो तबाही केरला में आती है, तमिलनाडु को पानी चाहिए. तो इसीलिए तमिलनाडु को थोड़ा लगता है कि उसके डैम ना कहीं केरला के पास ना चले जाएं और केरला कहीं ऑपरेट ना करने लगे उसको, तो पानी मुझे कम मिलेगा, बड़ी दिक्कत हो जाएगी. उसको तो मिलता है, मुझको तो वो मिला था ना कुछ टाइम. हाँ, उसको तो ना मुल्ला पेरिया डैम में 999 years का लीज वारंटी अंग्रेजों ने दे दिया. But ठीक है, that is what the Supreme Court can give the amendment and all those things, ना. So that is the Supreme Court and the Parliament in fact can issue amendments. तो चेंजेस होते हैं. ओके, ऐसा नहीं है कि मिल गया तो बस मेरा ही है, खिलौना पापा ने तुम्हें दे दिया तो मैं समझ मेरा ही है, so you cannot touch it. कभी-कभी मैं इसको दे देता हूँ. Tamil Nadu has also been a critic of the legislation as to fear it that it will lose its hold over 4 of its dams which are located in Kerala. The dam includes the Mulla Periyar, whose structural stability and safety are being debated over the past 40 years. कितने साल से डैम और आगे कब तक डैम. And Parambikulam, an important reservoir that caters to irrigation requirement of the western district of the Tamil Nadu. ठीक है, so that is there. Now, what is the way forward? The way forward is given the sentiments expressed by the number of parties, including the AIADMK, जिसकी ये symbol है, and ally of the BJP on the bill. The centre can hold talks with the states to allay their fears and frame the rule suitably. तो इसके लिए सेंटर बीच में आ गया है और बोलता है कि we will jointly look into both of the parties that are having the concerns and then we will try to moderate the issue. I wanted to tell something. Yeah. I just linked some things like Frozen 2 is there, right? So the dam was there. One was like the people of Arundel and one were the people of the sun. Then the people of Arundel gifted the dam, right? You saw the movie, a dam type of thing. And then the people of there think that no, this is causing trouble. What should we do? And then a fight. Second, na? Frozen 2. And then a fight only started. Yes. So this is there. Moving towards the last one, and not the further sections. And again, one of the headlines इस न्यूज़ को भी हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे because again it's a sense of pride to us. लेकिन अब क्या बोले, अब तो ऐसे भी न्यूज़ आने लगे हैं कि ब्रेन ड्रेन हमारा हमेशा से होता है. अब तो ऐसे ज़्यादा लगा कि we got a message that was flagging and it talks about the brain drain that's happening कि बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा अमेरिका. This doesn't make any sense really. मतलब वो लोग भी पढ़ते हैं, ठीक है, बट हमारी पढ़ाई तो उधर चली जाती है ना, उनकी पढ़ाई हमारे पास कहाँ आती है? उनकी पढ़ाई भी अगर हमारे पास आए तो दैट इज द सिग्निफिकेंस ना. तो पढ़ेगा इंडिया और बढ़ेगा अमेरिका. बट एनीवे, दिस इज अ प्राइड मूवमेंट इन फैक्ट. Twitter new Hilsman and early last year amid news that the one of the Twitter you know. Yeah, Twitter I don't think it's really for kids. Yeah, it's a social platform wherein one voices his opinion. Creates a profile like Facebook that has been named as a Meta now, and there the
व्यूज और ओपिनियंस आर शेयर्ड, और इसी में बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग भी हो जाती है, बुलिंग हो जाती है, पीपल स्टार्ट ट्रोलिंग ओवर सम ऑफ द ओपिनियन, सम ऑफ द व्यूज दैट आर शेयर्ड, ठीक है, तो दैट्स व्हाई ट्विटर थोड़ा ज़्यादा कंट्रोवर्शियल भी एट टाइम्स हो जाता है. But this is for pride, then that's why let's not. No, this is a different thing, but regarding to Twitter only. तो यहाँ पे है कि Twitter large investors are pushing for the leadership change at the social media. NYU, New York University, marketing professor Scott Galloway told NPR, "I think product development has been anemic." Product development, बहुत ही anemic means low in blood, low in the RBCs, low in blood. So product development सूख सा गया है, जैसे you may say that it's gone barren. I think their business model is flawed, but more than anything, the lowest lying fruits here is to find a full-time CEO. So problems हैं, बहुत ज़्यादा problems हैं, but एक best thing है कि what you can get the CEO, a good CEO, a full-time CEO, not a good, full-time CEO, okay? A full-time CEO वहाँ पे क्यों क्या आ गया था? क्योंकि जो present CEO who is there, Mr. Dorsey, he is also a CEO of another financial service company called Square. So Twitter was not having a full-time CEO. Okay. So that is what was the view that was expressed almost a year back. और अब उसका हमें देखने को मिल रहा है how the things has developed. So this is Mr. Dorsey. More than a year and a half later, Twitter now finally has full-time CEO. A few days ago, the baton passed from Mr. Dorsey to Parag Agrawal, its Chief Technology Officer. Mr. Parag Agrawal, from India origin, he's a CTO at 37 years of age only. Okay, 26 में hacker yesterday. He is only 37 years of age, and he is the youngest to head a top 500 companies in the world. S&P 500 is a listing of Standard and Poor's company. That means the top good companies to be traded worldwide. तो यहाँ पे उसका वो head है, so that is a good achievement. Yeah, it was just 10 years ago that Mr. Agrawal joined Twitter as a software engineer. This was after a BTech from IIT Bombay and a doctorate from Stanford University, where his thesis. What does this mean? Thesis, when you do a doctorate, you give a thesis, detailed information. No, not information, a detailed literature you do write on a particular subject. Message. Yeah, तो student का वो last age होता है. पहला age क्या होता है? KG. So yeah, nursery. Sorry. Nursery. और वो last होता है doctorate. Okay. Yeah, BTech thesis was about presenting efficient technologies for managing the integrating uncertain data, to manage and integrate. There are a lot of data into the Excel. If you see, a lot of data comes into, okay, then you manage them and then integrate them. You make club them together. Okay, like building a block. Yes. Integrating data, he needed just 6 years to become its CTO. Chief Technical Officer. Chief Technical Officer, a role in which, as Reuters reported, he oversaw Twitter's technical strategy and was responsible for improving the pace of software development while advancing the use of machine learning across the company. So that was the most important part. He is from India, from IIT Bombay. He graduated but moved on to Stanford University in order to carry out his doctorate. And then further he was inducted as a software engineer in Twitter. And from the software engineer as a Twitter, he just moved further to the chief technical officer, and then now he is a CEO. बहुत जल्दी, बहुत ही अच्छे position पे, top position पे he is in the company. Okay, so that is what is covered into this article. Moving further into the business section, कुछ खास नहीं है हमारे लिए, तो आगे चलते हैं. Sports section में yes, there is something because the match is going on. Second match हमारा इंडिया न्यूजीलैंड का टेस्ट मैच हो रहा है और वहाँ पे कुछ खास हुआ था. फर्स्ट डे था, कल सेकंड डे था, परसों फर्स्ट डे था. ओह अच्छा, आज थर्ड डे है. ओह शायद अभी तक इंडिया जीत भी गया होगा, पता नहीं. कल मयंक he made a century. Yes, मयंक अग्रवाल he made a century. कितने
बैट्समैन विकेट होते हैं ऑल टुगेदर एक इनिंग में, वो तो कितने प्लेयर्स होते हैं? 36. कितने प्लेयर्स एक इनिंग एक टीम से? 10, 20, 30? I think 20. T20 तो मैच होता है 20 ओवर्स का, ठीक है, बट दे आर 10 प्लेयर, 11 प्लेयर्स होते हैं, 10 बैटिंग करते हैं, 10 ऑल टुगेदर हु प्लेज इन फैक्ट एज अ बैट्समैन, प्लेयर हु बैट्स इन फैक्ट 10 विकेट गिर जाते हैं तो इट्स अ टीम कंसीडर्ड एज अ ऑल आउट। ऑल टुगेदर कितने प्लेयर्स? ऑल टुगेदर तो एक टीम के 11 होते हैं, एक टीम के 11, ऑल टुगेदर 22 प्लेयर्स आते हैं एंड वन एम्पायर। तो ठीक है, एक तरफ बैटिंग करती है और 10 लोग जब आउट हो जाते हैं इट्स कॉल्ड ऑल आउट, ठीक है, ऑल आउट, ठीक है। अगर और कोई तो बॉलिंग करेगा, बॉलिंग भी 5-6 लोग करते ही हैं, या तो 5-6 लोग करते ही हैं, ठीक है। अगर एक बॉलर सारे लोग को आउट कर दे तो वो लोग बैटिंग करने लगेंगे जो बच्चों में बॉलर। हाँ वो तो करेंगे, लेकिन ऐसा कितनी बार होगा? एक ही बॉलर ने सारे लोग को आउट कर दिया। मे बी वो एक बार भी नहीं हुआ होगा। अभी तक बस 2 बार हुआ है। वाह, 2 बार हुआ है। बस 2 बार, एक इनिंग में एक ही बॉलर ने सबको आउट कर दिया, एकदम साफ कर दिया। ये बहुत रेयर था। Yes, and this has happened yesterday. So, this is what's being told. India may have bundled out New Zealand for the lowest score, 62, on the Indian soil and virtually sealed the game. The series win. The second day play. The second day play of the second test will be remembered for Azaz Patel's rarest of the rare feat. rarest मतलब वो एक बार नहीं, वो हमारा वैक्सीन की तरह rarest में rare में clotting हो जाएगी। Rarest of the rare feats, the New Zealand left arm spinner joined England's Jim Laker and India's Anil Kumble. Even India's also. ठीक है, so one is from the England, Mr. Jim Laker, then one from India, Anil Kumble, and one from New Zealand now, Azaz Patel. He's from New Zealand. Though, interesting part is in the perfect 10 club to make the Wankhede test, that is in Mumbai, Wankhede test his own. पता है, Azaz is from Mumbai. Mumbai? Yes. Actually, जैसे आप in 8 years, 9 years, you moved from UAE to India. ठीक है. What happened with Azaz? He moved to New Zealand after when he was 8. Only 8. Only हाँ, तो अभी तो इधर आ गए ना. Yeah. तो वो भी इधर से चले गए हमेशा के लिए। हाँ, न्यूजीलैंड हमेशा जाकर के सेटल हो गया, तो अभी वो न्यूजीलैंड टीम की तरफ से खेल रहे हैं, बट ही इज एन इंडियन, ही वाज बोर्न इन मुंबई, और वानखेड़े स्टेडियम जो कि मुंबई में है, वहां जाकर उन्होंने परफेक्ट 10 लिया। वो बहुत खुश हो गया। एग्जैक्टली, दिस इज व्हाट वी डू, मेड द अकॉम्प्लिशमेंट ऑल द मोर स्पेशल। ठीक है, नॉटविथस्टैंडिंग अभी इस सिचुएशन क्या था कि 263 रन लीड है इंडिया के पास और डे खत्म होने में भी बहुत टाइम है, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा पिक्टोरियल है। जिम लेकर ही हैज ऑलरेडी टुक 19, एक मैच में, एक टेस्ट मैच में 2 इनिंग होते हैं ना, पहली बार इनिंग बैटिंग करते हैं, फिर दूसरी टीम, फिर वो करते हैं, फिर दूसरी टीम करती है। ही टुक 19 विकेट्स आउट ऑफ 20 विकेट्स। टीम में एक कम 19 लेना, सोचो 19 अभी तक आज तक किसी ने नहीं लिया एक्सेप्ट जिम लेकर। अभी तक किसी ने नहीं लिया एक्सेप्ट जिम लेकर। ठीक है, इन्होंने लिया है, 10 लिया है, लेकिन 1 इनिंग में, सेकंड इनिंग में ज्यादा नहीं लिया। ठीक है, बट जिम लेकर पहले इनिंग में भी 10 लिया, दूसरे इनिंग में 9 लिया, पहले मैच 9 लिया था, दूसरे में 10 लिया था। ठीक है, सो दैट इज व्हाट्स देयर। So that's all. Moving further towards the reservoir of history, again the dam. डैम ये डैम कब तक रहेगा? और ये तो डैम पहले इंटरेस्टिंग था, पर अभी थोड़ा सा। ठीक है, मैं इसको जल्दी कवर करूंगा। ये मुल्ला पेरियार डैम के बारे में है, द रिजर्वायर ऑफ द हिस्ट्री, द 126 years मुल्ला पेरियार डैम इन इडुक्की डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला, इडुक्की डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला ओवर हियर, जो कि यहाँ दिखता है, इज ओन ऑपरेटेड एंड मेंटेन्ड बाय तमिलनाडु। ये तमिलनाडु इसको ओन करता है, ऑपरेट करता है, मेंटेन करता है, लेकिन है कहाँ? ये इडुक्की डिस्ट्रिक्ट केरला में है। ठीक है, इन एन आउटकम ऑफ द 1886 अग्रीमेंट बिटवीन द देन ट्रेवनकोर प्रिंसली स्टेट, एक्चुअली ये ब्रिटिश ने उस समय लीज पे दे दिया था, एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट, इट डाइवर्ट्स द वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ओके, इट डाइवर्ट्स द वेस्ट फ्लोइंग रिवर टू द ईस्ट थ्रू अ टनल फॉर इरिगेटिंग अबाउट 58 हेक्टेयर्स इन 5 ड्राई सदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। तो इसको डाइवर्ट कर दिया जाता है, रिवर के मूवमेंट को, इन ऑर्डर टू, उधर भी तो अगर पानी नहीं मिलेगा तो लोग तो ऐसे ही टें हो जाएंगे, तो उसके लिए इसको बनाया गया था। एकदम बीच में है, यस, एकदम एजेस पे है। ठीक है, एडुकेट डिस्ट्रिक्ट व्हिच ओन्स एंड ऑपरेट्स मेंटेन द डैम। कंसर्न अबाउट द सेफ्टी ऑफ द डैम वर फर्स्ट रेज इन 1979 नवंबर
1979 में जब से बात की गई है कि आफ्टर 46 डैम्स हुआ नॉट इन गुड कंडीशन फेलियर्स हुए थे। तो पहला इसका हुआ था कंसर्न आफ्टर विच द डैम वाटर लेवल वाज लोअर टू 136 फ्रॉम इट्स फुल लेवल। पहले 152 मीटर फीट के लिए डिजाइन था, उसको घटा करके 136 फीट कर दिया गया। मतलब वाटर की जो हाइट है डैम की, उसकी हाइट को कम कर दिया गया था। ओके, since the mid 1990s Tamil Nadu had been demanding the restoration of the water level। तमिलनाडु ने बोला कि मुझे और ज्यादा वाटर चाहिए, और ज्यादा वाटर चाहिए। यस, फ्लो को बढ़ा देगा तो केरला का क्या होगा? water level to the on the ground that it had completed most of the strengthening work। तो उन्होंने बोला कि मैंने काम का मरम्मत कर दिया है and then the water needs to go back। However, Supreme Court in 2006 allowed water to be stored up only to 142 feet, not 152। ठीक है, and asked Tamil Nadu to carry out the balance work। When Kerala enacted a law in March 2006 against raising the water level beyond 136, क्योंकि डैम अगर कमजोर हो जाती है तो टूट जाएगी तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। ओके, यस, the matter yet again went to the Supreme Court और May 2014 में reiterated its previous ruling और केरला लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता करके खारिज कर दिया गया। तो अभी 142 इज द मैक्सिमम हाइट दैट इट कैन गो। तो केरला ने अपोज करा था, बट केरला की बात सुप्रीम कोर्ट ने सुनी नहीं। ओके, सो दैट इज देयर। इसी के बारे में लास्ट स्लाइड। बट द कंट्रोवर्सीज यहीं पे खत्म नहीं होती है। मिड अक्टूबर में क्या हुआ था, व्हेन सदर्न एंड द सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स इन केरला वर लैश्ड बाय टॉरेंशियल रेन एंड लैंडस्लाइड्स। केरला में तो आजकल हमेशा बारिश होती रहती है। तो द सेफ्टी ऑफ द डैम अगेन बिकेम मैटर ऑफ फिर से हो गया। So it was under these circumstances that the excess water was released from the dam through a spillway gate। अब भी इस कारण से ये न्यूज़ में है ना कि वाटर को एकाएक छोड़ दिया गया था। तो विंटर सेशन में भी इसका डिस्कशन भी होना है। बोला भी नहीं, वार्निंग नहीं दिया। वार्निंग बहुत ही कम रात में ही छोड़ दिया और बिना कम वार्निंग के। So you should give the warning so that the persons who are residing on the banks of the river they should evacuate। तो वार्निंग नहीं दिया, बहुत कम वार्निंग दिया। So it has been asked, ये कहा गया है, as the water release resumed in the early hours of November 13 the wake of the water level reaching 142, जैसे ही 142 हो गया था, so regulation approved the Central Water Commission। Kerala Chief Minister Priyani Vijayan wrote to Tamil Nadu Chief Minister Mr. M.K. Stalin कि बाबा शटर खोल दो, लेकिन वार्निंग तो दो कम से कम प्रॉपर, और ड्यूरिंग डे टाइम, रात में मत करो। रात में लो और वार्निंग दोगे तो कहाँ जाएंगे, सो जाएंगे, इवैक्यूएट नहीं कर पाएंगे ना। तो यही चीज बताया गया था। सो बाकी और भी चीजें हैं, बट ऑलरेडी बहुत लंबा सेशन हो रखा है, तो इसको किसी और दिन हम लोग कवर करेंगे। ओके ओके, सो दैट्स ऑल। Bye everyone. Bye everyone. Thanks for listening. Thanks for watching. In fact, and thanks for being there for long. But hope you enjoy the session. I try to make it a bit simpler. कहीं कहीं पे दिक्कतें आती हैं, terms आती हैं, but still, bye. Have a good day. Bye. Thank you. Thank you.